Really. Good morning, good morning, good Hi. morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning, Very good morning, Good Very morning. good morning. मैम। मैम आप बहुत स्लीपी लग रहे मैं हूँ नहीं वैसे स्लीपी, मैं तो हो। बहुत अच्छा। अच्छे से सो रही हूँ। Good In morning, fact, बेटे। overslept. DCBD, good morning. Good morning, auntie. Good morning. मैम Mhm. समटाइम्स बहुत अच्छे से नींद आती है ना, तो भी आप जब जगते हो तो स्लीपीनेस होती है आपके हाँ, फेस पे। exactly. No. Yesterday I slept very early. I mean, I came early also and I slept early also. Now I'm in Delhi only for a while, so it's going to be like easier for me. मैम आपका बैकग्राउंड क्या है ना, वो फोटो वो देख के मुझे पता चल गया जो यू आर इन दिल्ली। Yeah, we all come to know. So these flowers are given by Poonam and Suman. Poonam from Chennai and Suman from Gibraltar. So these are looking so stunning. So this is making the background even better. And yes, this is the background that I normally have. This is like a beautiful painting which is painted by Deepak. It's huge. And lots of the whole house looks like an art gallery because Deepak paints a lot as a hobby. So yeah, Oh. that's what it has. So there are lots of beautiful That's paintings. wonderful, ma'am. Yes. Yeah. So this is with your colors. Like if you actually see light jal rahi hai to pata nahi lagega. एक second. So these are with your colors. That's how nahi abhi bhi dark hai. So these Oh, are the yeah, we colors can of the see the rainbow. That's how they are made. yeah And pink and yellow yes. are So always talented है visible. sir, तो Yeah, so they are in totally series. filled No, with Vibgyor is creativity and violet, art. indigo blue. वैसे ही बने हुए हैं, like बने हुए, series. wow. Beautiful. So we've Wow. had it for years now. Yeah, so today's chapter, a little serious types, but very important. Like जब हम 13 chapters से अपनी dreams की तरफ जा रहे हैं, so there are, certain roadblocks is what I call them, that we need to clear away and clean that pathway of reaching our goals. So उसमें सबसे बड़ा roadblock हमारा relationship के grudges होते हैं. पास्ट रिलेशनशिप में ग्रजेस होते हैं, किसी से भी हो सकते हैं, कभी इन लॉज से होते हैं, कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से होते हैं क्योंकि वो रिलेशनशिप फुलफिलिंग नहीं थी या ब्रेकअप हो गया था, कभी स्पाउस से होते हैं जब बहुत अच्छी शादी नहीं चल रही है और स्पाउस या मतलब रिश्ता टूट गया है. तो आज का चैप्टर उसके बारे में है क्योंकि सबसे डीप सीटेड थॉर्न होता है रिलेशनशिप्स का, क्योंकि उसके साथ इमोशंस बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं एंड फीलिंग इज द फ्यूअल. सो फीलिंग नेगेटिव होके इसलिए कई बार हमारे रिलेशनशिप ग्रज की वजह से हमारे ड्रीम्स अचीव नहीं हो पाते. तो बहुत जरूरी है कि पहले तो ऑफ कोर्स चैप्टर में जो लिखा हुआ है वो हम आपको बताएंगे, बट उसके अलावा आई विल गिव यू अ वेरी पावरफुल एफर्मेशन टू iron out the relationship grudges, जिसकी वजह से आगे का रास्ता बहुत क्लियर हो जाएगा और हमारे ड्रीम्स डिजायर्स फटाफट विल बिकम अ क्विक मैनिफेस्टर. क्योंकि बहुत बड़ा सा एक बोल्डर, बहुत बड़ा रॉक जो शायद रास्ते में रखा हुआ है, जो हमने रियलाइज भी नहीं किया था. कई बार वो ना सबकॉन्शियस माइंड में जैसे मिट्टी के नीचे दब जाते हैं ना, वो वाले ग्रजेस इमोशंस वो दबे हुए रखे रहते हैं, हमको पता नहीं होता, और वो हमारे हर एक रिलेशनशिप, हमारे मनी को, हमारे करियर को, बाकी के रिश्तों को कलर करते हैं. कलर अच्छा नहीं है वो, है ना, क्योंकि वो दबे हुए इमोशंस हैं जो हैं, मतलब अभी भी ग्रज है लेकिन हम चाहते नहीं है उनके बारे में बार बार सोचना, लेकिन हमने उस कांटे को दबा दिया है, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी है, ईंटें डाल दी है, पत्थर डाल दिए है और उसको नीचे दबा दिया है. उसको हम ऊपर सरफेस पे आने नहीं देते क्योंकि वो हमको पेन और हर्ट देता है, लेकिन वो अभी भी है अंदर डीप सीटेड. तो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज होती है वो आंखों के सामने हमको हमेशा दिखती है, वो कहीं ना कहीं आ ही जाती है. मतलब अपने आप हमको अब करंट रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज होंगे, हम ओपन अप नहीं हो पाएंगे बहुत आराम से, या फिर हमको खुल के सफलता नहीं मिलेगी जो भी काम हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो वाला कांटा अभी भी उस एरिया को अफेक्ट कर रहा है जो शायद 15 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले हमको चुभा हुआ था, क्योंकि हमने वो कांटा निकाला नहीं है, हमने उसको दबा दिया है, क्योंकि वो हमको हम रियलाइज कर रहे थे कि वो हमको पेन देता है.
तो आज हम उस कांटे को निकालेंगे, ठीक है? उसमें भी दर्द होता है और लेकिन निकाल के हटाना बहुत जरूरी है अगर हमको एक सफलता के रास्ते पे जाना है, एंड इफ यू वांट टू आंसर आवर ड्रीम्स. So that's why today's chapter is called Heal My Relationships, Magically Heal Relationships. So healing मतलब टूटी हुई चीज की चोट लगी है तो उसको हील करने की जरूरत है. तो वो चोट हम आज उस पे उसको कांटा निकाल के उस जगह पे मरहम लगाएंगे और पूरी तरह एक दिन में हो सकता है नहीं ठीक हो पाए. Sometimes it does take time because emotions are very deep seated here and feeling frequency is very, very negative. Okay, so we need to remove that. It's just all right. You know, everything in everyone's life happens for a very good reason. Universe knows. मतलब universe is love. कहते हैं ना, God is love and love is God. God is love, then he cannot do anything which can be hurtful and painful to us. Okay, so हर इंसान के साथ जब कोई चीज होती है उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है. सो आज हम इसीलिए उस पे वर्क करेंगे. तो आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आराम से बैठ के हम, बिकॉज हमको कभी लगता है कि नहीं ठीक तो है, मुझे ऐसी कोई ग्रज नहीं है, बट एक्चुअली होती है हमको. सो जब लिखने बैठेंगे तो हमको समझ में आएगा. और अगर नहीं है, अगर अभी तक नहीं है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है. अब ग्रज ही मतलब रिश्ता पेन देता है. जरूरी नहीं है कि किसी ने हर्ट किया है तभी पेन हो. somebody passes away, है ना, कोई गुजर जाते हैं, ट्रांजिशन ले लेते हैं अगले जन्म में, बर्थ लेने के लिए, तब भी तो उतना ही पेन होता है. तो ये दोनों सिनेरियोज में ये वाला चैप्टर वर्क करता है. एक तो इसमें वर्क करेगा ही, टूटा हुआ रिश्ता या फिर कोई रिश्ता जो हर्ट देता है, और दूसरा या फिर कोई रिश्ता जो पेन दे रहा है क्योंकि दैट पर्सन हैज टेकन अ ट्रांजिशन, हैज पास्ड अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड. सो ऑब्वियसली अ पर्सन जिससे हम बहुत क्लोज होते हैं, सडनली उनकी डेथ हो जाती है तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हर्ट करता है ना. सम पीपल क्रिएट अ वैक्यूम. कभी कभी पेरेंट्स पास अवे, दे क्रिएट अ वैक्यूम. सो वी नीड टू लाइक लर्न टू मूव ऑन, बिकॉज वो जो पर्सन है वो सोल बन चुका है अभी. और उनको जब हम पेन, हर्ट, मिसिंग, वैक्यूम के साथ जब हम रिमेम्बर करते हैं तो उन सोल को भी बहुत तकलीफ होती है. वो कई बार ट्रांजिशन नहीं ले पाते हैं. So although it's easier said than done anytime, like as I talk, it is not that difficult, that hard. But when you actually, like अगर करने बैठो तो actually ये बहुत difficult practice होती है. इसीलिए ये बहुत आगे जाके आई है 15 पे. पहला वाला हमने अभी तक टूटा हुआ रिश्ता को ठीक नहीं किया है ना, मतलब उसके बारे में हमने मैजिक रिलेशनशिप्स किया है जिसमें ऑलरेडी अच्छे रिश्ते हैं, उसमें 5 पॉइंट्स लिखे हैं. तो आज वाला चैप्टर तबीयत से बैठ के, कई बार हमको याद नहीं आएगा कि अच्छा वो कौन सा रिश्ता था जिसके कारण ऐसा हो रहा है, बट देन जस्ट डू इट, है ना, जस्ट थिंक ऑफ इट. याद आ जाता है हमको बिकॉज कई बार वो बहुत बरी हो जाता है पीछे. सो या, लेट्स डू, एंड बिट्टी जी विल बी रीडिंग फॉर अस टुडे. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग. मैंने देखा बिट्टी जी एंड शीबा, मैंने कहा शीबा ने इस चैप्टर का ना कॉपीराइट्स ले रखा है, रीडिंग कॉपीराइट्स, तो वो आज चेंज हो गया है. टुडे शी इज रीडिंग द हीरो. I know, it's so funny because Yeah, you were supposed to seriously, read when I and Priya saw that, messages me. Sheba and like Sheba has taken the copyrights of reading this chapter, but yes, today even in Hero, it is a very beautiful read. Hmm. Yes, Bitti ji, Day please. Acha, 15. yeah. No, no, okay. Day 15. Magically heal your relationships. Yeah, so here we can see that there is a photograph in a frame and there are two people जिनके बीच में solid crack लगा हुआ है दोनों के बीच में, and there is a candle in front of them जिसके नीचे heart बना हुआ है. इसका मतलब है दिल से हमको आज वो light चलानी है. Candle का मतलब होता है light. सो दिल से, और नीचे हार्ट सिग्निफाई कर रहा है दैट आज हम दिल में वो कैंडल, वो लाइट, इस रिलेशनशिप के लिए ग्रैटिट्यूड की लाइट, ग्रैटिट्यूड का कैंडल जलाएंगे. If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame toward any person for anything, you can change it
through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father in law, parent, friend, or neighbor. When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least but grateful for other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. And that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets and the worse your life gets. Whether it's current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings towards another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? Holding on to anger is like grasping a hot coal with an intent of throwing it at someone else. You are the one who gets unburned. Unquote, Gautam Buddha, founder of Buddhism. Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they won't be alive if it wasn't for your ex-partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship through your example. You will be teaching your children the greatest tool of their life, gratitude. Or if you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step and she looked for the things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found and remembered things she had always wanted to do, but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in. And her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship
that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or its past relationship and the person is no longer in your life. Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person and the great things you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated and ended. If relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship and you don't need the other person in order to heal it. There is a gold in every relationship, even the difficult ones, and to bring riches to all your relationships and your life, you have to find gold. As you dig and discover nugget of gold, write it down and address a person by name and express your sentence in gratitude. Name, I am grateful for what? Paul, I am grateful for our time together while our marriage did end, and I learned a lot. I am so much wiser today, and I use what I learned from a marriage in many of my relationships today. Paul, I am grateful for everything you did to try and make our marriage work because 10 years of marriage means you did try. Paul, I am grateful to you for our children and the joy I receive from them every day could not be without you. Fourth, Paul, I am grateful to you for the hard work and the long hours you put in to support our family while I was at home taking care of our children. I it was a big responsibility to have all of us dependent on you. So thank you. Fifth, Paul, I am grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. Sixth, Paul, I am grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. Seventh, Paul, I am grateful to you for the times when I was sick and I did your best to take care of me and the children. Eighth, Paul, I am grateful for the great times we had and we did have many. Ninth, Paul, I am grateful that you want to continue to be a father to our children. 10th, Paul, I am grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they do to me. By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings toward the person anymore because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several years until you reach the point where you don't have any bad feelings toward the Several days, person and Binti ji. Several days. Like you don't have to repeat this Acha. for several years. You can Oh, read sorry. from here again. Every Okay, relationship ma'am. is. Okay. You may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings toward the person anymore.
If you are using gratitude magical part to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receives the benefits in their whole life. If you chose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. And at the same time, you will see other current relationships in your life magically improve. In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop difficulties before they get even any bigger, and instead, you will increase the magic in the relationship. Magic practice number 15. Magically heal your relationship. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say, thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Third, sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Name, I am grateful for what? Fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you so much, Thank you, Vitti ma'am. ji. Thank you so much. So yeah, as I said, this is the most important chapter that we need to actually work on because emotionally, like हमारे कुछ areas life के हैं जो अभी take off नहीं कर रहे हैं, the way they should actually take off is because of some grudge that we have in a relationship और दुख जो हमको किसी रिलेशनशिप के टूट जाने पे या किसी के पास अवे होने के कारण हो रहा है इसलिए इस चैप्टर पे भी वर्क करना जरूरी है बिकॉज एक्चुअली वो वाली फीलिंग्स हर जगह मौजूद है इधर उधर किसी भी चीज में पैसा भी खुल के इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि एक ग्रज का मतलब एक रोड ब्लॉक है आपकी सक्सेस के रास्ते में So that is why doing this practice is so important now. Rhonda Byrne has started every chapter with one quote. This chapter did not have any quote. और इन्होंने अपने इस चैप्टर में अपनी जिंदगी से दोनों एग्जाम्पल दिए हैं. एक उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए दिया है जिनसे उनका डिवोर्स हो गया था 10 साल के बाद, पॉल जो है, और दूसरा उन्होंने अपनी मदर एंड फादर के बारे में बताया है. सो दोनों बहुत अलग अलग एग्जाम्पल हैं. पॉल से तो डेफिनेटली लाइक रॉन्डा बर्न के बच्चे हुए और फिर पॉल और उनका रिश्ता टूट गया था. फिर वो अकेली ही रही, उन्होंने जॉब करी प्रोडक्शन हाउस में वहीं ऑस्ट्रेलिया में ही. पॉल ब्रिटिश थे तो वो वापस अपने जगह चले गए जहाँ के वो थे, बिलोंग करते थे. चिल्ड्रन कंटिन्यू टू स्टे विद रॉन्डा बर्न ओनली. तो उन्होंने पॉल के लिए देखिए कितने अच्छे से 10 पॉइंट निकाले, है ना, और ढूंढ ढूंढ के निकाले होंगे, जबकि बहुत हर्टफुल रिलेशनशिप थी उनकी उनके साथ में. और दूसरा उन्होंने जो एग्जाम्पल लिया है दैट शी इज टेकन इज अबाउट हर पेरेंट्स. सो शी सेड दैट इट इज द बेस्ट मैरिज दैट शी हैज सीन ऑफ हर पेरेंट्स एंड दे हैड अ लव एट फर्स्ट साइट एंड डेकेड्स उन्होंने साथ में बिताए. बट 2004 में उनके फादर की डेथ हो गई तो उनकी मदर एकदम से अकेले रह गई और बहुत ज़्यादा शी वॉज बिलीविंग बिकॉज उन्होंने सोचा नहीं था कि उनको कभी ऐसे अकेले रहना पड़ेगा. एंड दे वर वेरी वेरी अटैच्ड बोथ ऑफ देम. सो जब वो पास अवे हुए कुछ टाइम तक द मदर वॉज मोर्निंग, लेकिन क्योंकि इनकी फैमिली ही ग्रैटिट्यूड वाली थी तो मदर ने फिर एक स्टेप लिया कि शी लाइक स्टार्टेड राइटिंग ब्लेसिंग्स फॉर all these years of beautiful marriage that she had with her husband, जो उनकी बहुत सुंदर शादी चली थी डेकेड्स तक. उसके पॉइंट्स निकाल के उन्होंने लिखे कि कितना ग्रेटफुल थी वो अपने हस्बैंड को, कि उन्होंने क्या क्या किया, कहाँ घूमे, सब कुछ. और उसके बाद उन्होंने फ्यूचर को डिजाइन करना शुरू किया. एंड इट सेज दैट शी टुक द नेक्स्ट बिग स्टेप टू राइट ब्लेसिंग्स फॉर द फ्यूचर, कि अब वो अकेली हैं, मतलब हस्बैंड नहीं थे, लेकिन अब उनको क्या क्या काम करने हैं
और वो सारी वो चीज़ों की उन्होंने लिस्ट किया जो वो अभी तक नहीं कर पाई थी, क्योंकि शी वॉज वेरी वेरी एक्सट्रोवर्ट, यू नो, लाइक मदर फादर इनके थोड़े मतलब वैसे थे कि बहुत घूमना फिरना, बाहर खाना उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, और ये बड़ी बिंदास थी इनकी मम्मी कि घूमना, ये करना, वो करना। सो उन्होंने पूरी लिस्ट बनाई कि अब उनको क्या करना है आगे, ग्रैटिट्यूड लेके। सो आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम सक्सेसफुल इन रनिंग माई कुकिंग बिजनेस और वट एवर इट वॉज, यू नो, जो जो उन्होंने किया। सो इस तरह करके उन्होंने ब्लेसिंग्स लिखी फ्यूचर के लिए, अबाउट ऑल द थिंग्स दैट शी वांटेड टू डू। ओके, सो इस तरह से वो अपनी जो रिश्ता था, जो उनके हस्बैंड पास अवे हो गए थे, तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से हील किया, एंड शी हैड अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ, बट आफ्टर अ फ्यू इयर्स शी ऑल्सो पास्ड अवे. So that is about her parents, and then of course husband के साथ तो हमने भी पढ़ा ही है that Paul, I'm so grateful that we did have beautiful times together. Paul, I'm so grateful that you know you did not get time to see our children grow up, but I got them. So that way she managed to find out 10 blessings for her husband. जबकि बहुत पैसा, you know, different kind of a relationship थी उनकी, not that great, but she did that. Okay, so इसीलिए हमको भी वैसे ब्रेव बनना है, और हमको वन रिलेशनशिप ऐसी चूज करनी है जिसके बारे में हम सोच के हमको पेन होती है, या हम सोचना नहीं चाहते उस रिलेशनशिप के बारे में, या जब भी कोई टॉपिक भी उठाता है तो वी जस्ट evade it, you know, we don't want to talk about it, we don't want to dwell into the thought of it. So it is like brushing under the carpet is not what we are here for. We have to face it head on. कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, चैलेंज होती है, तो ये नहीं कि मुझे बात नहीं करनी है इस बारे में, दैट्स cowards doing it. We are not coward, right? So we will bring it on. I mean, like, let it come in front of us and then challenge it by finding blessings. It's going to be very hard for the person. I mean, कभी कभी तो फिजिकल अब्यूज भी इन्वॉल्व होता है रिलेशनशिप में, है ना? सो वो फिजिकल अब्यूज में 10 पॉइंट्स ढूंढना इज वेरी वेरी हार्ड, राइट? सो ये वाली प्रैक्टिस करके कभी रोना आता है, कभी दोबारा से वो सारा सीन सामने आ जाता है, बट लेट इट कम। जैसे दूध में से मलाई ऊपर आके ही हटती है, वैसे वो वाले इमोशंस नेगेटिव ऊपर आएंगे तभी वो रिमूव होंगे। सो देयर इज अ टैगलाइन, नो, फील इट टू हील इट. सो फील इट टू हील इट. When you feel it, you will be able to. So इसलिए it is okay to be in that emotion. Never berate yourself and beat yourself up that, you know, बार बार ऐसा हो रहा है, मैं ऐसी हो गई, मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है. कॉन्फिडेंस इसीलिए लूज हो रहा है क्योंकि अभी तक हमने उस चीज को अंडर द कार्पेट ब्रश किया हुआ था. अब हम कार्पेट उठा के उसको बाहर निकालेंगे एंड फेस करेंगे, ग्रैटिट्यूड से उसको कलर करेंगे, और फिर वो अपने आप हट जाएगा. इट विल डिसिपेट अवे फ्रॉम आवर लाइफ. So this is what we need to do. और हो सकता है एक दिन में ये नहीं हो पाए, then we may need to do this again and again. So it is a deep-seated thorn that you have to bring it out. कभी कभी कम दर्द होगा, कभी कभी ज़्यादा दर्द होगा. अगर हम बहुत इमोशनल पर्सन है तो हमको बहुत पेन होगा, बट थॉर्न तो निकल गया है ना, पेन तो अब हील हो ही जाएगा. सो उसमें ग्रैटिट्यूड हमको लगातार कुछ दिन करने की ज़रूरत होगी. अगर नहीं हो रहा है आपका एक दिन में, और वो ग्रज नहीं जा रही है, बिकॉज इट इज़ ओनली ग्रज, एंगर, रिजेंटमेंट, और जो इस चैप्टर में लिखा हुआ है, इट इज लाइक यू आर होल्डिंग द हॉट कोल इन योर हैंड. हुज हैंड्स आर बर्निंग? आवर हैंड्स आर बर्निंग ना. हमारा पैसे में रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं, हमारे करियर पाथवे में रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं, हमें कुछ मेडिकल इश्यूज हैं. मतलब बीमारियां सबसे ज्यादा ग्रज की और रिजेंटमेंट की वजह से होती हैं. सो जो ग्रज रिजेंटमेंट अपने आप जब जाएगी, अपने आप हम ठीक होते जाएंगे. और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इज दैट सेल्फ लव कल्टीवेट करना बहुत जरूरी है. तो अपने आप हमारी लोगों से ग्रजेस कम हो जाती है. जब हम अपने आप से प्यार नहीं करते तो हम लगातार लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए ऐसे करे, इस तरह से हो, वो, है ना? सो अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है, जो वैसे भी इस बुक की जर्नी में हमको हो जाता है. There's a lot of self-love we get. We start liking ourselves. We start loving ourselves. We start loving spending time with ourselves and all those things. Otherwise, we'll be chasing. Over-socializing जो लोग करते हैं, that is lack of self-love. Everybody is over-socializing that I'm busy doing that. Okay, now after this, I'm busy doing this. I'm busy doing this. अच्छा मेरा ये है. किसी को कंपल्जन नहीं है किसी भी पार्टी में जाने के लिए या किसी भी सोशल इवेंट और गैदरिंग में जाने के लिए.
ठीक है, एवरीबडी नीड्स टू बैलेंस द लाइफ. ओवर सोशलाइजिंग अगर हो रही है, इसका मतलब है सेल्फ लव नहीं है अभी भी. So we need to actually have that, then it is an escape route. Wherever we are looking for some people don't like to be in the house so much because they always want to be here and there and, idhar action, udhar action. That means that abhi bhi aap bhag rahe ho किसी चीज से, कुछ चीज है जिससे आप भाग रहे हो. ठीक है, सो वो आइडेंटिफाई करना, और वो मोस्टली कई बार रिलेशनशिप के कारण होती है. सो इससे हमारा अपने साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है. So how Deepti will start loving Deepti, or Deepti will get connected to Deepti, is by doing this particular practice. So whosoever it is, it could be a person who's passed away, it could be a person, आपका best friend हो सकता है जिससे आपका रिश्ता टूट गया नहीं है, और that person whether he is alive or not, we still have to do this practice. It is not this practice कि वो person जिंदा ही है. अगर वो नहीं भी है, चाहे आप टच में नहीं हो, आपको पता नहीं है 10 साल पहले कुछ हुआ था, अभी भी वो ग्रज है, अभी वो कांटा चुभा हुआ है, ऑल्दो उसके ऊपर आपने लेयर्स डाल दिया है, उसको कवर अप स्टोरी कर दिया है पूरा, तो वो, लेकिन वो है अभी भी. और उसके कारण there's so many people who've had broken relationship, now they don't want to get into another relationship, like, because it always says that, oh, I've had enough of, I've had enough of marriage, I don't want to get into another relationship. Then we need to do this even more. Okay, because now you are standing alone with a lot of confidence, then you can get into another relationship, which is also an individual choice, but it should not be because of the grudge that you hold towards the previous marriage. Not getting into a new relationship is an individual choice that singles can have, that even if you're separated from your partner, you can have. So of course, that's an individual choice. There's no doubt about it. But because of the past relationship experience, not getting into the current or future relationship, that should not be the reason, because past is past. A bygone is a bygone. Okay, we have to move afresh, standing tall with a lot of pride and self-love, and then getting into a new relationship. Then it will be beautiful. Because अगर उसके tins and strains हैं पीछे वाली relationship के, तो वो अभी भी वो tainted रहेगी relationship, है ना, जो future वाली relationship है. And in fact, all the other relationship, सारी relationship, like एक पीछे की कोई रिलेशनशिप है, सपोज मदर इन लॉ के साथ ही रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है या नहीं था, या जो भी रीजन है, उसकी वजह से आपकी बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ किटपिट चलती रहेगी, कभी किसी और के साथ चलेगी, हस्बैंड के साथ चलेगी, वाइफ के साथ चलेगी, किसी के साथ चलेगी, नेबर्स के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होगा. तो वो हर रिलेशनशिप को टेंट करता है. बिकॉज प्रॉब्लम तो अंदर है, विजन में है ना, विजन में ही हमको कुछ दिख रहा है, ब्लैक स्पॉट्स इधर उधर, क्योंकि पीछे से हम वो उनको कैरी करके लेके आ रहे हैं. सो वी हैव टू रीच दैट लेवल in life where we do not hold any grudge or resentment against anybody, and then you see कि money का flow कितना अच्छा हो जाएगा, career pathway आपका बहुत accelerate होने लग जाएगा, health बहुत बढ़िया आप enjoy करोगे, enjoying the best of health, that is the level we need to reach. So this is how it actually changes, और आपके सारे रिश्ते बहुत सुंदर हो जाएंगे. Amazing. So this is it about this chapter. लिखने का format is नाम लेके, ठीक है, जो भी, सपोज मनीष नाम है, मनीष, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, दैट्स इट. ठीक है, this is how we have to write the 10 points, and that's about it, because we don't want to hold the hot coal in our hands anymore. हमको छाले पड़ेंगे, हमारे हाथ बर्न हो रहे हैं, दूसरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, उसको पता भी नहीं है कि हम इतने ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं उसके साथ रिश्ते के कारण, वो अपना मस्त है. ठीक है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हाथ हमारे चलते हैं जब हम ग्रजेस होल्ड करते हैं. एंड सारी बीमारियों का रीजन, वेदर इट इज PCOS, वेदर इट इज थायराइड, वेदर इट इज डायबिटीज, वेदर इट इज हाइपरटेंशन, वेदर इट इज कैंसर, इनका रीजन ग्रज एंड रिजेंटमेंट होता है. ठीक है, सो वो लुइस है की बुक जो है हील माई बॉडी, वो भी ऑडियो बुक के फॉर्म में अवेलेबल है, आप उसमें पढ़ लेना. उसमें हर बीमारी का रीजन कोई ग्रज या कोई रिजेंटमेंट है. सो इसीलिए लेट अस जस्ट क्लियर दैट अप, and let's just take out that thought that we have towards the other person, because the other person is not getting affected, and why should we burn our life because of that person? We are enough and we are more than enough. Okay, we don't need people.
They just get added on to our itinerary. Okay, so I'm not losing myself. I'm still Deepti Pathak Verma. So Deepti Pathak stays, you know who it was. So other person is added to my itinerary, right? So you don't change yourself. So all the relationship are not gap fillers. The relationships in your life, they are not gap fillers. There are no gaps. We are whole, healed, and complete, is what Dr. Joseph Murphy taught us in the Power of Subconscious Mind book, that I am whole, healed, and complete. Now, when you get into the relationship from this platform, the other person will make your life very beautiful. Why? Because he's not plugging a hole. ओके मतलब वो थोड़ी है कि मेरे बहुत स्पेस है मेरी लाइफ में तो द पर्सन कम्स एंड यू नो प्लग्स द होल. इट इज नॉट दैट. Everybody enhances who we are. We need a person who's a cheerleader, who supports. Okay, and there has to be a camaraderie, even if it is a friend in your life. Like if I have a friend, I will not expect my friend or her to plug the hole. Okay, because you have to be whole, healed, and complete. And then when you get into the relationship, then it is going to be a complete, fruitful, enjoyable, fun relationship. Okay, so this is how it is. So अपने आप को heal करो, क्योंकि उस दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आप सफर कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, आपके पास पैसे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वो अपनी जिंदगी में मस्त है ना? So we are getting affected. So first affirmation is, can we please mute ourselves? Can we please check our mute buttons? So I am whole, healed, and complete. Dr. Joseph Murphy had asked us to keep repeating this to ourselves, and heal my relationship is the step we need to take to do that. Okay, and second thing is that always keep the affirmation I was talking to you about is that I am love, I love myself, and I easily attract love in my life. Okay, so when you keep telling this, then you stop expecting from others because you are whole, healed, and complete. There is no healing required in your personality. Your soul is whole, healed, and complete. Okay, now others, whosoever is coming, is adding to your itinerary. They're adding more to your life than what you already have. Then the relationship is beautiful. So this is how we need to work towards it. Okay, so coming to just today's practice, the first is definitely counting my blessings. Write today's date and day, and then write your 10 blessings with any language that you're comfortable with. That I am so grateful, or I'm happy and grateful, or thank you, universe, whichever way you want to write. So write those 10 blessings. Try and find new 10 things every day. So that will give more to your life also. Okay, because whatever you give, you receive multiplied several times. So write that, then reread, or 3 baar out loud, thank you, aap bolo. So that's first. And second is choose one problematic, difficult, or broken relationship. Okay, if you're not able to deal with the loss of a person, then it has to be that first. Okay, so सारे fillers करो अपने आप से आज उस रिलेशनशिप में. तो आज अगर 2 हैं तो आज एक का कर लेना, कल दूसरे का कर लेना. कल की जो प्रैक्टिस है उसके अलावा ये भी प्रैक्टिस हमको करनी होगी. So but in one day only for one person. Okay, and उनके बारे में हमको 10 blessings लिखनी है, gratitude लिखना है, think of the times when the relationship was good. उस टाइम से आप निकाल के nuggets करो. तो इसमें जैसे रॉन्डा बर्न ने लिखा हुआ है, turn that hot coal that you're holding into gold today by using gratitude. So we want to change that hot coal into gold by using gratitude today. Okay, that's what we are doing. 10 points likhne hain humko, and then be in a good feeling frequency for the whole day. When you're writing, you might want to cry, you might want to do whatever. Go ahead and release that emotion. Okay, let it come and release. Let it come and release. Feel it to heal it. Okay,
and let it go because it's very natural that it comes. And रात को सोने के पहले magic rock practice. Hold that rock in your hand, मुट्ठी बंद करके छोटी छोटी चीजों को देखो. चाय बनी थी, उसमें बिल्कुल appropriate sugar थी. Thank you so much. फिर उसके बाद खाना was just rightly warm and it was so tasty. Thank you so much. पानी आपको पीना था, एकदम से ऑफिस बॉय पैंट्री बॉय ने लाके दे दिया. So thank you so much. So इस तरह से छोटे छोटे nuggets ढूंढो, like find small pebbles and pick up the best one, say thank you, and go to sleep with some affirmation, maybe just wealth and success. Okay, बस 2 words. Keywords को सोच के सो जाओ, अच्छी कोई चीज. तो आप सुबह बहुत अच्छे जोन में उठोगे because subconscious mind loves the powerful words. So डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने ये सिखाया था कि बस 2 words ही यूज कर लो. So wealth and success, 2 words. Okay, it could just be amazing relationship. It could be enjoying the best health. Okay, just this. इसको सोच के फिर सो जाओ. अब ये एक सीड प्लान किया था, अब नींद में इसके 500 apples निकलेंगे. That means this is going to grow tall and multiply because when you sleep, the subconscious mind is super active. And whatever seed you have sown, that kind of grows and grows and grows and flourishes when you have slept in gehri neend. So that's how it functions. Okay. So this is about this chapter. Now let's go to the other book, Hero by Rhonda Byrne again. And we are from today starting a fresh new topic, which is on humility. Humility means हमारा मतलब हमेशा धरती पे पैर रखो, है ना? कभी भी उड़ो आसमान में, तब भी आंखें नीचे होनी चाहिए. ये नहीं कि I am better than the others. I know a lot. Like I have learned a lot in my life. I'm this and above anyone else. मैं normal लोगों की तरह नहीं हूँ. मुझे बहुत आता है. मैं सबसे ऊपर हूँ. है ना? उसका opposite को humility बोलते हैं कि no, I'm still learning. Be grounded. That's what it means, right? And Sheba will be reading for us from US. Yes, Sheba, can we please start? Yeah. Hey everyone. Dipti, I'm going to start reading. My throat is a little sore. So if my voice is not clear, just stop me in the middle and somebody else can read. As of now, it's beautiful. But if you're straining yourself too much because of us, No. then it's okay. Yeah, no. It's not Okay. hurting at all. It's just sounding weird. Weird. Okay. But it's not sounding weird. Okay, then it's fine. It's sounding nice and husky. Okay, then it's fine. All right. Humility. Lane Beachley. If you're on a hero's journey, it's really important to maintain a sense of groundedness and humility. Yeah. So Lane Beachley says this, that अगर आप हीरो हो तो आप हमेशा ग्राउंडेड रहोगे. वो हीरो कोई हवा में नहीं उड़ता कि वो मतलब मैं तो सुपर ह्यूमन हूँ और ये तो ऑर्डिनरी लोगों के साथ मेरा वो नहीं है. उसको कोई वो नहीं होता, एयर्स नहीं होते अपने बारे में. वो हमेशा लर्नर रहता है. Wants to be in middle of people, helping them, listening to them in whichever way. So always be grounded and be humble. Yeah. Peter Barbosh. Become genuinely humble, because if you're humble, you're going to listen. If you listen, you're going to learn. And if you learn, you can teach. Yeah. So everything starts from being a good listener first. So we can cultivate this, all of us. So be genuinely humble. Don't act humble. And because if you're humble, you're going to listen. और जो लोग सुनते हैं वो हमेशा देखो, हो सकता है कि आप किसी से interaction कर रहे हो जिसमें से like I was just reading something on Instagram, like listening on Instagram, that said that शाहरुख खान के बारे में लिखा हुआ था that उनके जो अच्छे ट्रेड्स है उसके बारे में बात करते हैं. पहले कि वो एक हफ्ते में 2 किताबें पढ़ते हैं in spite of his busy schedule, and he learns, he reads all these books that we talk about. Then second thing was that they said that if he's listening to someone, he will give you 100% of his attention. So even if someone else is speaking at that time, he will not listen क्योंकि वो आपसे बात कर रहे हैं. So this is such a beautiful thing, because अगर कोई person आपको 100% में से आपको लग रहा है कि नहीं मेरे काम की चीज, मतलब आप उससे 0.1% भी सीख रहे हो ना, तो आप सीखते जरूर हो. So this is one trait that always, like I still attend all the workshops and webinars and seminars back, like back, forth, center, everywhere.
सो वाई बिकॉज मुझे यही लगता है कि ठीक है, मैं तो खुद किताबें लिखती हूँ तो काफी कुछ अभी आता है, एंड देन आई एम ऑलवेज कॉन्स्टेंटली रीडिंग द लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स, सो आई डू अ लॉट ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट इनटू लर्निंग एंड ग्रोइंग ऑलवेज, एंड अदर देन दैट आई रीड ऑल द सेल्फ हेल्प बुक्स जी, जिनके बारे में मैं आपको बताती रहती हूँ. When I'm working out, I'm reading the audio book, listening to the audio book on YouTube or something. So there's a lot of learning going on. और कभी कभी किसी किसी वेबिनार में कोई टॉपिक होता है तो मुझे लगता है कि ठीक है, इसके बारे में तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, उस टॉपिक पे मैंने बुक लिखी हुई होती है, बट स्टिल आई अटेंड दैट वेबिनार इवन इफ इट इज 2 hours 3 hours, दैट ठीक है मुझे 99% आता होगा, बट यू नेवर नो, मे बी 1% ऑफ दैट इंफॉर्मेशन और नॉलेज विच इज मेंट फॉर मी, आई नीड टू गेट फ्रॉम देयर. So that's very important. So that will only happen when you intend to listen, learn and grow, because when you are learning, you are also teaching, isn't it? Like when all of us interact with each other, हम books को कितना रेफर करते हैं. मैं बार बार जब अपनी classes भी लेती हूँ, कोई suppose I'm taking a webinar workshop or I'm there in some international conference, I'm then also referring to Ikigai book which says that when you sit for 30 minutes your metabolism falls down by 90%. Then I tell them that stop eating when you're 80% full. You don't have to feel full. Then I talk about keep doing the moderate activities that involve sitting, bending, twisting, turning. So all these things we have learned in Ikigai book. So they are so deeply engraved in my mind. Again and again when we do here, I keep referring to the power book, right? So you must have become so familiar with the power book कि उसमें ये लिखा था, उसमें वो लिखा था. डॉक्टर जोसेफ मर्फी, सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग. हमने वो किताबें इसलिए थोड़ी पढ़ी है कि बस पढ़ के निपटा दो. It is basically so that we can learn, and then through us they can be processed to all the others around who need help or who need the reference of that again and again. So we are constantly using the reference of the books, no? जो भी हमने पढ़ी है, क्योंकि वो एक दूसरे को भी हमको सिखाने में सीखने में हेल्प करती है. जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों को बताते होगे कि उस किताब में भी ये लिखा हुआ था. So that's how it actually works. हाँ जी. Maston Kip. My teacher told me that the higher you go, the more humble you must be. He said, humility is to always remain approachable. Just because you're successful today, you have a bestseller today doesn't mean that success is guaranteed. Yeah. So told me to be humble, to be more humble as you go up the ladder of success. Okay, नाक और नीचे होने चाहिए. जितना ladder of success आ रहा है, उतनी ज़्यादा humility होनी बहुत ज़रूरी है. Never be like in airs and always be approachable. You should not say, oh, I'm not going to do this now. I'm not going to, my standard has changed. I'm not, like all those things which are not that good. Never forget from where you have come, and the people who were with you when you were not a super success. That is the first sign of failure. Okay, so always remember people, जब हमारा नाम नहीं था, जब हम एक बहुत ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं, तो उस वक्त सारे जो आपके दोस्त, आपके सब जो साथ में थे, फैमिली मेंबर्स, ये नहीं, उनको भूल के, of course like all of us are going to achieve monumental success, there is no doubt about it, because जिस तरह से gratitude ingrain हो रहा है, जो level of practice सबकी है, I think gratitude अभी epigenetics में घुसता जा रहा है हमारे DNA में धीरे 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 धीरे, है ना, बिकॉज हम हर चीज के लिए थैंकफुल होते हैं. मैं कल देख रही थी, माई एयरपोर्ट्स केस आई हैड मिस्ड इन द कैब yesterday when I checked out of the hotel in the morning. So I was in Surat yesterday. So when I checked out of the hotel in the morning, I took an Uber and I came to my office, and like I saw that, and मैंने एयरपोर्ट्स पहने हुए थे बिकॉज मैं कोई ऑडियो बुक सुन रही थी. So when I came to my office और मैंने सारा सामान रखा, I logged in, so it was almost 5 minutes to 10 in the morning, and उस वक्त मैंने AirPods तो पहने हुए थे. अब उसका जो केस होता है वो मैंने ढूंढा because I needed to take off my AirPods, and that case was just missing, and I could not find it at a place where I normally keep it in my back pouch. And I remembered that मैंने ध्यान से उसको अपने होटल रूम में रखा था, so I couldn't have left it behind. So so जैसे ही वो missing हुए, I knew that I need to change the energy. I don't have to think that, oh, कहाँ गया कहाँ. I said thank you for my AirPods that I listen so much. When I'm flying, it's such a meaningful time because I'm always with my AirPods. I'm listening to some book that I have downloaded. So whenever I take a flight, I always download some book
and then I read it in my 2-3 hours of that flight boarding से, like जब तक हम बाहर नहीं आ जाते. तो आई ऑलवेज, तो मैंने बहुत सारा कि कभी कभी मैं म्यूजिक सुनती हूँ, लाइक आई लव डीप हाउस म्यूजिक, सो आई हैव लॉट्स ऑफ दैट, आई लिसन टू दैट. सो इस तरह से immediately I changed the energy first. I said that I'm not thinking about missing, and that that's one expensive thing, Apple AirPods जो होते हैं. और it was like, so then I thought that, okay, universe, just take me to wherever it is. And then I called up the cab person. Normally cab people after checkout, they don't take the call because वो उसके through होती है ना, उनकी centralized calls होती हैं. He first call picked up my phone and I told him that आप back seat पे देखिए, कुछ गिर गया है, वो हो गया. Anyhow, like eventually I got them after 5 minutes. But throughout, I was thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. This was going non-stop in my head, and my energy was in a very high frequency, So, but then, and then I got them, and so easily. And then I promised to the universe that I'll be ultra careful about my belongings a lot, because actually my bag had fallen down and, whatever. But I did not take even 5 minutes to find them because of these practices. Imagine if the practices were not there. I would have lost them. I wouldn't have known that, because हमको कोई भी चीज हम find करते हैं वो हमारी frequency और energy के कारण होती है. It's not because, ऐसे ही randomly. So this is how life is. So this is what epigenetics is. Genetics is of course like जो genes में है, worry, anger, fear, ये सारे emotions हमारे genes में होते हैं कई बार, overthinking, etc. बट हमारे जीन्स तो लगातार बन रहे होते हैं. अब किस एनर्जी से हमारे जीन्स, मतलब सेल्स आर ऑलवेज डिवाइडिंग. इवन राइट नाउ देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स विच आर अंडरगोइंग द सेल डिविजन इन आवर बॉडी, है ना. ओल्ड सेल्स die and they are replaced by the new cells. The new cell will develop the genes according to our current energy. So now that this is going into our DNA, so much gratitude. So yesterday I realized I was laughing at myself. I said that who have I become? Like constantly lost such an important thing, and then constantly saying I was feeling so good about myself. So all of us do that, like all of us in the worst of the circumstances do that, like we are constantly thankful. So this is who we need to become all the time, and more highly successful you become, more grounded we need to be. Only then success will give us amazing new pathways, and success will stay. It should not be temporary. Success has to be permanent. Good health has to be permanent. Money flow has to be permanent. So that is how it is. Yeah. Fall or failure. My dad would always tell me that the biggest reason you will fail is because your past success went to your head. Whether we go the way of the hero, whether we go the way of the hero is decided by our behavior and the way we treat others. The hero is kind and humble, and so the way of the hero is one of kindness and humility. Our behavior will either be stepping stones that propel us forward on a journey to a dream, or stepping stones that take us backward. The choice is ours. Yeah. So here what it basically means is that we had studied about that instant payment thing. Instant. So whatever, if you're kind to someone, we will get an instant payment from the universe. Okay. If we have done a little act of, kindness, instant payment. If we have yelled at others, anyone, instant payment. If in our mind we have thought not that great thought about someone, we will get instant payment. Something will go wrong in our life. Okay, so this is how the universe operates. The law of cause and effect is operating all the time. जैसे ही आपने कोई cause किया, अच्छा cause किया, तो आपको बहुत बड़ा payoff मिलेगा उसका, अच्छे cause का. अगर हमने बुरा cause किया, thoughts, words and actions में, तो उसका और भी बड़ा payoff मिलेगा. But सब कुछ instant payment होता है. So I'm so hooked on to that word, about that instant payment. So we need to be ultra careful about every thought, every word and every action, if it is directed for someone's good or if it is directed for someone's bad. मन में अगर कुछ आया कोई विचार which is not that great,
immediately catch yourself, pinch yourself at that very moment and, take it off, say apologize for it and implant another good thought about that person. So this is what, like, if somebody's not behaving right and you're not liking, and then you think, "Ki, why this person is always so grumpy and, this and that," immediately say, "Thank you for all my amazing relationships." That is it. Apni energy ko different karke rakho. Let negative energy will keep coming. That's very normal. But we don't have to develop them. Instead, we have to plant another energy, जो बहुत अच्छी positive energy है. That is what we need to do. So, Paul or Freya says that my dad would always tell me that लोग fail जिंदगी में इसलिए रहते हैं, fail होते हैं क्योंकि उनका past success उनके दिमाग में चढ़ गई है. That's what it is. This is how we speak in Hindi. कि उनका दिमाग में चढ़ गई है सक्सेस, सफलता दिमाग में चढ़ गई है, मतलब सिर ज्यादा ही मतलब वो होता जा रहा है कि ओ आई एम लाइक अबव एवरीवन, आई एम नॉट नॉर्मल. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू काइंड ऑफ रियली लर्न, बिकॉज एक हीरो की जर्नी में दिमाग सिर पे चढ़ने का कोई मतलब नहीं होता. एक हीरो हमेशा काइंड एंड हम्बल होता है और हमारा बिहेवियर ही है जिसके कारण लाइक वी विल बी डिफरेंट, वी विल लुक डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. इट इज बिकॉज ऑफ अ बिहेवियर. इसमें लिखा हुआ है जो पेव करेगा वो रास्ता जो सफलता का रास्ता होगा हमारी जिंदगी में, और हमारी जर्नी जो हमारी ड्रीम की तरफ है उसमें हमारा बिहेवियर बहुत अफेक्ट करता है. वो ही एक स्टेपिंग स्टोन है जो हमको आगे लेके जाएगा. अगर वो नेगेटिव है तो हम बैकवर्ड्स जाएंगे. द चॉइस इज आवर्स. Okay, so this is commitment is another very beautiful chapter in the topic. I'll just see the time. If we have the time, we can. Okay, we have 5 minutes. Hanji. Anastasia Soar. It was my intention, my commitment, that even if a door was closed, I would bang on it. I would break the door or I would get in through the window. There was no way that I would not make that happen. You automatically commit to something if you really want it enough. You don't even have to think about it. You just jump right into it. If there's a movie you're desperate to see, it takes no effort for you to commit to go to a theater and see it. When you fall head over heels in love, you can't stop yourself from committing to see the other person. Yeah, so that has to be talks about commitment where anesthesia बताती है कि अगर दरवाजा बंद भी होता है तो मैं उस पर बैंग करके चाहे मुझे ब्रेक करना पड़े बट मैं उसको जरूर खोलती हूँ, क्योंकि वहां मेरी उसके पीछे, उस दरवाजे के पीछे मेरी ड्रीम्स है. इसका मतलब है कि जो इम्पेडिमेंट्स या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपको अपनी ड्रीम अचीव करने में, बी अ गो गेटर. Okay, don't fail, don't fall, just get up and start walking. So failures will happen. They are the little tests that we get. Yesterday I was reading a book, उसमें भी यही लिखा हुआ था कि जब भी बहुत बड़ी सक्सेस आने वाली होती है ना, उसके पहले आपका कुछ लॉस हो सकता है, आपका कुछ ऐसी चीज होगी दैट इज नॉट टू योर लाइकिंग, लेकिन उस वक्त आपका कंडक्ट डिसाइड करता है कि आगे का दरवाजा गोइंग फॉरवर्ड हाउ इज इट गोइंग टू बी फॉर यू. Okay, so never be scared of a failure. Just go ahead and commit to that, जो भी आपका dreams, desire, जो भी है उसके लिए. So that is basically what it says. So इसमें example movie का दिया हुआ है कि अगर आपको कोई desperate, आपको वो movie देखनी ही देखनी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता. मतलब it will not take you an effort to go and watch that movie in the theater. Okay, this is how it actually works. So commitment is very important, that I'm committed to achieve my goal and my dream. Hanji. Laird Hamilton. The one thing about the activities we pursue on the ocean is that they're very committed. You don't kind of ride a wave. You either ride it or you don't. Every wave and every ride is a belief and a commitment. You're taking that leap. Laird Hamilton knows about commitment. If you need inspiration to strengthen your commitment, then watch a video of Laird Hamilton committing to ride one of the world's deadliest wave at Tipu's on the southwest coast of Tahiti.
Renowned as the heaviest wave in the world, T-Hupos produces consistent barreling waves as high as 21 feet, 6.4 meters, and as thick as a building, breaking over an extremely shallow and razor-sharp reef. The only way to surf T-Hupo when it is when it is that big is to be towed out of on the back of the jet ski and released at speed. It was not until Laird had to let go of the sorry. It was not until Laird had to go off the tow rope that he saw the magnitude of the double-walled monstrous wave rising up behind him. He had to make a split-second decision whether to commit to ride the wave or not. Had Laird not made the commitment to ride the wave, it's unlikely he would have survived the mountain of water and the treacherous reef below. Instead, Laird Hamilton broke the boundaries of what is possible and made surfing history. Yeah, so he is known in the history for riding this wave. और इसमें लिखा हुआ है watch Laird Hamilton's video. I am also yet to watch it. I'm going to watch it today or tomorrow. This video where he rode a monstrous wave because he was a surfer, and that's where so he is there in the record. He's created a record by riding that wave, and he had he could see that wave coming. अब उनके ऊपर होता है because surfers U-turn भी लेके वापस आ जाते हैं. So he decided whether should I ride up to this wave or not. Imagine as big as a building it was. And he could have actually lost his life. But then, like he really decided to challenge because inka kaam hi yahi tha. And then he made the world's biggest record of riding this wave. Let's just see. I'm sure YouTube pe hoga inka wo riding that wave or video bana hua. So it would be great fun to watch also. So I also don't know much about, this writing or this record that he had made. Though हमने day 0 में पढ़ा था इस book का that he made a record by riding one of the most treacherous and monstrous waves ever. Okay, so we'll just watch it. I mean, 6 feet lambi building jitni badi wave, he could do that, and that set him a record. So that means that like if you really want it, you will do it. This is what it means. So it says that the one thing about the activities we pursue on the ocean is that you're very committed to your work. So yeah, that is how it is. So this I think we'll read tomorrow. Yeah, thank you so much, Shiva, for reading for us in spite of a bad throat. Thank you and get well soon. Thank you so much. मैं आपका वो फंडा अपनाया. आपने बोला ना कि गुरु ने बोला उल्टा लटको, प्रिया ने बोला पढ़ना, तो मैंने कहा पढ़ना, सोचना ही नहीं. So sweet. Actually, today, na Vijay sir was supposed to read, but he's traveling, na, so he has got some network issue. In that like the place she's traveling, so he said that I won't be able to read. So let any other person. So I don't know. Shiva's thought came into my mind कि शिवा को बोलती हूँ, and because there are many, but होता है ना सभी का काम वाम होता है उस टाइम शिवा का भी काम होता है, but I know. But still, I don't know why Shiva's name floated into my mind, and said, तो इसको मैंने बोला, and then I got Priyanka also. Priyanka ने भी कहा कि मैं पढ़ लूंगी. I'm taken off. तो मैंने कहा ठीक है, अगर शिवा मना करती है तो फिर तुम पढ़ लेना. You'll get the chance also then. So thank you, Shiva, for pitching. Always, you are a big savior for us. Every time there's some No. thing now you Even pitch when it into is to it. do And with network or sharing the screen. every time. Thank you so much for this. Yeah. Yeah. Many Thank thanks. you. And thank you, Priya, for organizing all this. It's not a small thing that one does. I mean, like always, yesterday I wrote so many blessings for you. Me too. Thank you so much, Yeah. ma'am. Thank you so much. Okay, so I was talking to you about that affirmation. I'll precisely tell you because I write it. It is, I am love. I love myself, and love always finds me. Keep writing this as many times as you want to. Then your expectation from the others is going to come down, and you will find self-love from within because your subconscious mind starts believing that I'm love and I love myself.
And then all your relationships will become amazing. And well, the life's journey becomes smooth, because this whole journey is about finding yourself, right? We are in this journey to find ourselves. Find yourself. We've not really found ourselves. We're still running away, over socializing, doing things, doing that, and this, that, whatever, not spending enough time with ourselves. So yeah, I mean, that is one thing we need to do. Find yourself. On a lighter note, ma'am, today is Bitty Ji's anniversary, so we can make the mood a bit light. कितने साल हो गए बिट्टी जी आपको? It's like 29. Happy Oh, anniversary. Happy yeah. anniversary. Very happy Thank you anniversary so to much. you and your Happy husband anniversary. together. Happy wedding anniversary. My Thank God, you're you. so Thank young. you. Happy Thank you anniversary. so Only Happy 29. Very anniversary, young. Bitty ji. Yes. सरिता जी को कितने हो गए हैं साल? 43. यो Yo. You look super young. January You में are it will also be looking 20. so. Yeah, 43 in हाँ, January. they Next look month. young and they look yum Yes. also. Yes. Young and yum. मेन बेटे एनर्जेटिक बेटे जो मुझे है उनका पूछो। वॉइस हाँ आंटी, हाँ आंटी हाँ आपको जी। कितने हो गए? बताऊं 54 हाँ हाँ कितने? 54 54. Oh my wow God. great Wow. 55th Wow, चल रहा है great. और हम हाँ, वो गोल्ड जुबली मना चुके हैं। आपको तो प्लैटिनम का मेडल मिलना चाहिए। देखो Wow, होप सो congratulations. आप देना मुझे। बट हाँ ऑफ कोर्स, आप सबके हस्बैंड्स बहुत लकी हैं कि उनको आप जैसी बिटिया मिली है। हम भी लकी हैं, हमें वो मिले। Wow. हाँ जी। Gratitude. Wonderful. Gratitude, yes. Gratitude. Ma'am, Amazing. Archana ma'am wants to say something. After a long time, she's like, she अच्छा wants to say अर्चना something. जी, हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। हेलो एवरीवन। मैं इधर काफी दिन से आ नहीं पा रही थी। कविता जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मैं कर देती अभी मैं बहुत दिन से आ नहीं पा रही थी, अभी काफी दिन के बाद आज आई हूँ और मुझे कुछ शेयर करना था। हूँ। अभी पीछे दीपा की शादी में गए, दीपा के यहाँ शादी में गए थे, तो आई टुक लॉट ऑफ ज्वेलरी विद मी। बहुत सारे सेट्स थे वो, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को भी पहनाना था, बहू को भी पहनाना था, तो कई सारी चीजें ले गए थे। एंड आई अटेंडेड द वेडिंग, केम होम, सारी चीजें ऐसे ही पर्स में पड़ी हुई थी। कई दिन के बाद मैंने सोचा आज ठीक से लगा देते हैं सब, और जब लगाने लगे तो वन सेट वाज मिसिंग। तो मुझे बड़ा वो हुआ कि मैं किसी से बताऊंगी तो डांट पड़ेगी। अभी सोचने लगी कहाँ छोड़ा होगा, दीपा के घर में छोड़ा होगा या होटल में छोड़ा होगा। एंड मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने दीपा से शेयर किया। तो दीपा बोली दीदी ऐसे कैसे हो सकता है, और मुझे तो मिला नहीं। तो मैंने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं, बस सोचते रहे और थैंक यू लिखते गए, फोन में ही लिखते गए, मतलब मल्टीपल टाइम्स फोन में ही लिखते चले गए। 2 दिन ऐसे ही बीत गए इसी चिंता में कि कहाँ होगा। फिर हमने सोचा अच्छा चलो किसी को भी मिला होगा, ठीक है, वो उसी के पास रहने दो। एंड द थर्ड डे व्हेन आई वाज, मैं पूजा कर रही थी, पूजा करते समय मुझे पता नहीं क्यों बार बार नजिंग ख्याल आया कि जो वो छोटी छोटी पोटलियों में मैं करके ले गई थी, छोटे छोटे बैग्स में, हो सकता है उन्हीं किसी बैग में हो सकता है। एंड उसके बाद पूजा करने के बाद मैं उठी, उन बैग्स को मैंने टटोला, तो एक में वो कुछ मालूम पड़ा कि कुछ है, एंड वही चीज निकल आई। तो मैं इतनी खुश हुई कि वो मेरी सबकॉन्शियस माइंड की वही होना चाहिए, जहां है वहां ले चलो, और 2 दिन के बाद वो चीज मुझे मिल गई। तो दैट वाज माय शेयरिंग। दिस इज अमेजिंग। एक्चुअली कोई भी चीज खो जाती है तो हमको बहुत ज्यादा वो नहीं करना होता है बिल्कुल भी। जस्ट टेल द यूनिवर्स and your subconscious mind that please lead me to where that thing is. So thank you So for all even I your if told the her journey to आप write concentrated gratitude also, मैम। मैंने कहा तुम हाँ उसके लिए लिखो, वो जरूर मिल जाएगा। हाँ और वो मिल गया, You तो both that are was related. हाँ, they are sisters. Oh, Real wow. sisters. Archana Acha. is my elder sister. Wow, wow. Today I So came Deepa to know. lives in Delhi and Archana ji lives in Kanpur, and she only introduced Archana ji to these sessions. मैम मुझे मेरा लगता है मेरा स्पेन में मार्बिया में पुलिस ऑफिस में मेरा फोन पड़ा है।
मैं मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ मुझे ले चलो वापस स्पेन जाने का टाइम आ गया। So I'm Please. leaving now. वहीं रखा हुआ है जाइए। वही बोलती हूँ कि वहीं रखा हुआ है। हाँ हाँ नहीं, वो सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता यस बोले तुमको तो बाहर जाने का एक बहाना चाहिए। हम बोला ऑफ कोर्स। हाँ, और व्हाई नॉट खूब घूमो फिरो, एंजॉय करो आप। You Thank you, deserve it ma'am. all. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Then we'll all Thank meet you, up. thank you, No ma'am. one's hand raised now because मुझे इसमें दिख नहीं रहा स्क्रीन पे। आज ब्यूटीफुल चैप्टर था मैम, वेरी नाइस। हाँ, कौन सा? और हील आज माय बहुत रिलेशनशिप, या कमिटमेंट, दोनों ही वेरी अच्छे गुड। थे। हाँ, दोनों अच्छे थे, दोनों बहुत अच्छे थे। दोनों बहुत और अच्छे आज थे। बहुत कमिट ध्यान से से सुनी ना, नॉट वॉकिंग इन विंटर्स, तो दिमाग में सारा घुस गया अंदर। अच्छा Okay. All right. Thank you so much. Thank you And so much, थैंक यू ma'am. मैम। Thank you so Ma'am. much, ma'am. tomorrow Thank with you. more very beautiful Thank you, chapter. ma'am. Thank you, ma'am. And ये जो मैंने Phenomenal. आपको Thank you टिप्स so बताए much, हैं, ma'am. इसको आज से ही करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि tomorrow never comes. I think all of us यस need to lower the expectations from people that we have and cultivate that love so that we become the generators of love rather than expecting this and that from people, because we are always enough. Okay. So thank you so much. Have a beautiful Friday full of love and laughter. Bye bye. Thank you. ma'am. Same to थैंक यू you, सो ma'am. मच। Thank you, Thank ma'am. you. Thank you, ma'am.